हेलो एवरीवन। आज आम मैंने डिस्कस करवा आमर यूनिट 7 जोटा कि अच्छी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च। तो स्टैटिस्टिक्स रो इम्पोर्टेंस कौन रही एजुकेशनल रिसर्च रे। फर्स्ट आम बुझा स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स मीन्स numerical representation of data. It is the numerical representation of data or information. तो न्यूमेरिकली जितेबाला आम रिप्रेजेंट करछे गोटे इनफॉरमेशन को सेटा को आम स्टैटिस्टिक्स बोली कहउछे। तो स्टैटिस्टिक्स रो इम्पोर्टेंसटा कौन रही एजुकेशनल रिसर्च रे। जितेबाला आम डाटाटा को क्वांटिफाई करूचे बा नंबर रे एक्सप्रेस करूचे सेतेबाला हमर कौन दरकार पड़ुची? स्टैटिस्टिकल मेथड सब दरकार पड़ुची। ता द्वारा कि आम कौन कर पारछे डाटा ऑर्गेनाइज कर पारछे, समराइज कर पारछे, जहा द्वारा कि गोटे बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको मिल पारछे। देन आम डाटा एनालिसिस कर पारछे। तो एजुकेशनल रिसर्च रे जेतेबेले आम कौन करछंती गोटे रिसर्च कंडक्ट करछंती सेतेबेले आम किछि डाटा कलेक्शन करछंती। तो से डाटाटा को जेतेबेले आम क्वांटिफाई करछंती बा सेतेबेले जेतेबेले अप्लाई नंबर करछंती, नंबर अप्लाई करछंती टू दैट डाटा, तो सेतेबेले हमर स्टैटिस्टिक्स रो यूज होची से एजुकेशनल रिसर्च रे, जहा द्वारा कि हमर डाटा कलेक्शन इजी हे पारची, डाटा एनालिसिस हे पारची, हाइपोथेसिस जहा हमें फॉर्मेशन करछंती तार टेस्टिंग मध्ये हमें करि पारछंती, हाइपोथेसिस टा ट्रू और फॉल्स सेटा टेस्ट कर पारछंती, से थ्रू कंक्लूजन ड्रॉ कर पारछंती एंड से अकॉर्डिंग फर्दर स्टडीज मध्ये करि होची। तो ये देखा स्टैटिस्टिक्स plays a crucial role in educational research by providing the tool and techniques necessary for collecting, analyzing and interpreting data related to student performance and educational outcomes। जोटा कि हमें एबे डिस्कस कले सेटा कौन करुची गोटे टूल और टेक्निक प्रोवाइड करुची कोथिपाई ना डाटा कलेक्शन पाई, डाटा एनालिसिस पाई एंड इंटरप्रिटेशन पाई। देन इट हेल्प्स इन डाटा कलेक्शन। तो ये स्टैटिस्टिक्स एंश्योर्स रिलायबल डाटा थ्रू प्रॉपर असेसमेंट डिजाइन, दैट इज डाटा कलेक्शन। देन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस रे कौन करची इट आइडेंटिफाइज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, जहा द्वारा कि आम गोटे डिसीजन प्रॉपर डिसीजन नहीं पारछंती डाटा एनालिसिस करके। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग बा टेस्ट डेवलपमेंट आम जहाँ को कहूचे आसेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल टेस्ट फॉर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। एटी हाइपोथेसिस टेस्ट करची ट्रू और फॉल्स जानी पारछे आम, तो से अकॉर्डिंग तार रिलायबिलिटी वैलिडिटी ए सब चेक करी होची। देन जनरलाइजेशन, जनरलाइज कर पारछे आम गोटे कंक्लूजन पाई पारछे, फाइनल गोटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन पाई पारछे। देन इन्फॉर्मिंग एजुकेशनल पॉलिसीज और पॉलिसी डेवलपमेंट जहाँ को आम कहूचे, तो यहाँ हो पारछी बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल इनसाइट्स। जेमती कि आमर टोटल वुमेन एजुकेशन रेट अच्छी 60%, तो आम सेटा टार्गेट रखिबा 10 इयर्स पर, आफ्टर 10 इयर्स 80% केमती हबो। तो ये आमर बजेट केते रहइबो, केते बजेट आम इन्वेस्ट करबा ए सब पई। तो ये सब डाटा गुडाक आम कौन कर पारछे पाई पारछे बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
तो ये सब है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च। देन देखिबा डाटा एनालिसिस। फर्स्ट आम बुझिबा व्हाट इज डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस है गोटे प्रोसेस जो थे कि स्टैटिस्टिकल आउ लॉजिकल टेक्निक्स अप्लाई हम कहा उपरे डाटा उपरे कौन पाई ना डाटाटा को डिस्क्राइब करने पाई इलुस्ट्रेट करने पाई कंडेंस करने पाई एंड फाइनली इवैल्यूएट करने पाई। तो डाटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ systematically applying statistical or logical techniques to describe and illustrate condense recap and evaluate डाटा। तो जितेबाला आम कौन कर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई कर डाटा को डिस्क्राइब करने इलुस्ट्रेट करने रिकैप करने एंड फाइनली डाटा इवैल्यूएशन करने से आम ताको कहूँ डाटा एनालिसिस। तो ये डाटा एनालिसिस पुणी टू टाइप्स रो। फर्स्ट है गोटे डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस डेस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस आ गोटे है इन्फेरेंशियल डाटा एनालिसिस। बुझेला डाटा एनालिसिस हो गला टू टाइप्स रो डेस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस एंड इन्फेरेंशियल डाटा एनालिसिस। एबे हमें ब्रीफली डिस्कस करबा डेस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस। Descriptive data analysis, it refers to the analysis of data of an entire population. Analysis of data of an entire population. गोटे entire population रो data analysis करिवो। जोटा कि descriptive statistics बोली मध्य हमें कहते। It is merely using numbers to describe a known data set. बुझेला एठी टोटल गोटे एंटायर पॉपुलेशन रो डाटा एनालिसिस होची। So basically descriptive statistics are used to present quantitative description in a manageable form. तो एटा क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस रे जाउची। बेसिकली डेस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस आउ इन्फेरेंशियल डाटा एनालिसिस बा डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जोटा कि हमर सिलेबस रे अछि से दीटा जाक जाउची क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस रे। क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस जोटा कि हमें ऑलरेडी पढ़ीचे हमर टू टाइप रो क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस आ गोटे है क्वालिटेटिव डाटा। तो ये क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस गोटे अच्छी एंड अदरटा हूँ
क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस किंतु हमर एठी सिलेबस रे अछि डेस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस एंड इन्फरेंशियल डाटा एनालिसिस स्पेसिफिकली ए दुटा हमको देछि तो ये जीवो क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस रे तो एठी डेस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस ए कोन करछि गोटे एंटायर पॉपुलेशन को कवर अप करछि तो एटा बेसिकली कोन करछि क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन दोछि गोटे मैनेजेबल फॉर्म रे descriptive statistics help us to simply large amount of data in a sensible way जोटा कि simplify करछि large amount of data simplify large amount of data in a specific way large amount of data in a specific way or in a sensible way. It reduces lots of data into a simpler summary. जेमती कि फॉर एग्जांपल आमे नेबा कोन ना हाउ वेल ए स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग इन मैथ एग्जाम रे से केते वेल परफॉर्म करछि सेठी हमें स्पेसिफिकली कोन ना रिजल्ट बा मार्क टाको मेंशन न करी तार एवरेज से केते मैथ एग्जाम रे स्कोर करे तार एवरेज टा कहि दोचंती तो एठी कोन हैला केते गुडे डाटा कोन हैला रिड्यूस हे गेला तो इटा रिड्यूस फॉर्म रे हमें जानले किंतु एक्यूरेट भी जानले तो एवरेज केते रहउची तो सही अकॉर्डिंग हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज कर परबा इट इज यूज टू डिस्क्राइब बेसिक फीचर्स ऑफ द डाटा इन द study. It is used to present quantitative description in a manageable form. तो ये descriptive data analysis रे हमर different statistical measures सब यूज हुए डाटा एनालिसिस करिया पाई तो से स्टैटिस्टिकल मेजर गुड़ा कहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी देन रिलेटिव स्टैंडिंग ए तीनटा मेनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो थरे कि हमर मीन मीडियन मोड जीवो देन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी देन रिलेटिव स्टैंडिंग ए तीनटा यूज होची डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बा डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस रे स्टैटिस्टिकल मेजर्स कहले ए तीनटा हमें बुझियो एबे देखिबा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो सेंट्रल टेंडेंसी रे हमर जाउची मीन मीडियन एंड मोड जोटा कि इंडिकेट द एवरेज वैल्यू ऑफ वेरिएबल बीइंग स्टडीड मीन रे हमर अरिथमेटिक मीन अछि ज्योमेट्रिक मीन अछि हार्मोनिक मीन मध्य अछि तो हमें बेसिकली कॉमनली यूज हुए हमर अरिथमेटिक मीन The mean of a distribution is commonly understood as the arithmetic average. Means mean arithmetic mean or arithmetic average. तो यार फॉर्मूला हला arithmetic mean formula the sum of the sampled values by or divided by the number of items in the sample तो यहाँ है अरिथमेटिक मीन रो फॉर्मूला सपोज आमे नेले कौन सैंपल x1 x2 x3 एमती करी करी आमे नेले xn तो ये फॉर्मूला ही जीवो कौन एगुड़ाक हो गला हमर सैंपल
तो ये फॉर्मूला है जीवो मीन इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 2xn बाय n बुझीगला। एटा है अरिथमेटिक मीन जहाँ को अदर वे रे सिंपल मीन बोली मध्य कह जाए अरिथमेटिक मीन और सिंपल मीन। तो सेमती ज्योमेट्रिक मीन भी अच्छी इट इज एन एवरेज दैट इज यूजफुल फॉर सेट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स दैट आर इंटरप्रिटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट एंड नॉट देयर सम। एटी प्रोडक्ट ये हुए एगुड़ाक बेसी यूज हुए नी एटी कौन हुए रेट ऑफ ग्रोथ मेजर करी हुए कहा थ्रू रे ना ज्योमेट्रिक मीन रे रेट ऑफ ग्रोथ टा को मेजर करी हो रेट ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ ही गला मीन। देन आम ए देखा मीडियन। मीडियन टा ही गला कौन ना इट इज ए पॉइंट इन एन अरे above and below where one half of the scores fall. It is a measure of position rather than of magnitude. तो यहाँ ही गला हमरो मीडियन। तो median is a point above and below where one half of the scores fall. It basically describes the middle of a set of data that does have an outlier. जमती कि आम गोटे डाटा नेले सपोज 1 3 3 6 7 8 9 तो ये आम मीडियन टा देखा मीडियन किए हम टोटल केते अच्छी 1 2 3 4 5 6 7 तो ये है जीवो मिडिल रे अच्छी हमरो एपटे 3 एपटे 3 मिडिल हला 6 अच्छी तो मीडियन है जीवो 6 बुझेला। सेमती जदि नंबा 1 2 3 4 5 6 8 9 एमती नहीं गले तो ये टोटल केतेटा हो गला 8 टा अच्छी 1 2 3 4 5 6 8 9 टोटल नंबर ऑफ अच्छी 8 टा। तो ये मिडिल आम देखा 4 and 5 दीटा जाक हूँ मिडिल तो ये मीडियन हो 4 + 5 by 2 दैट इज 7 by 2 और 9 by 2 जोटा कि हो 4.5 तो यहाँ हो गला मीडियन। तो मेनली यहाँ है मिडिल गोटे सेट ऑफ डाटार मिड पॉइंट बा मिडिल। तो यही फॉर्मूलाटा देखिबा मीडियन रो फॉर्मूला गोटे फॉर्मूला है ग्रुप डाटा पाई आ गोटे ही गला अनग्रुप्ड डाटा पाई। तो ये देखिबा फॉर ग्रुप डाटा सॉरी फॉर अनग्रुप्ड डाटा जदि इवन नंबर अच्छी इवन नंबर ऑफ स्कोर्स देन मीडियन हो गला इक्वल टू सम ऑफ मिड 2 scores by 2 then for odd number of scores median is equals to mid score। ऑलरेडी हमें देखिले जोटा है 6 आमर थिला मिड स्कोर
ऑड नंबर रे जेतेबेले इवन नंबर आसीगला हमें सम ऑफ मिड टूज करदेले 4 + 5 9 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4.5 आमर आसिला। एटा थिला फॉर ग्रुप डाटा। एबे देखिबा फॉर अनग्रुप डाटा हमर फार्मूला रहिबो फॉर अनग्रुप डाटा हमें देखिले। एबे देखिबा फॉर ग्रुप डाटा फर्स्ट हमको कौन करने को पड़िबो फर्स्ट प्रिपेयर ए cumulative frequency distribution। फर्स्ट है cumulative frequency distribution प्रिपेयर करने को पड़िबो। देन आमे फॉर्मूला यूज कर परबा। देन फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n बाय 2 माइनस FC बाय FM इंटू। तो ये L है लिमिट ऑफ लोअर मीडियन क्लास, n बाय 2 इज इक्वल टू हाफ of the sum of total frequencies। then FC है preceding middle class of cumulative frequency। middle class of cumulative frequency। then FM frequency of median class। then I size of the class interval। ए फॉर्मूला मन रखिया पड़िबो जेतेबेले या ऊपर हमर कैलकुलेशन हबो सेतेबेले यार यूज जानि हबो एंड ए फॉर्मूलाटा बेस्ट एक्सप्लेन करि हबो। तो एटा हला फॉर ग्रुप डाटा पई ए फॉर्मूलाटा, फॉर अनग्रुप डाटा हमर इजी फॉर्मूला हला। तो एटा हला मिड पॉइंट टाको बा मिडिल ऑफ ए सेट ऑफ डाटा डिसाइड करूची किए से ना मीडियन। देन आसिले मोड को द वैल्यू व्हिच occurs द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द सैंपल इज कॉल्ड मोड। जोटा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम थिबो सेटा को हमें कहबा। जेमती गोटे हमें डाटा नेले 1 1 1 2 3 3 4 तो ये मोड हो मैक्सिमम कोटा रिपीट है। तो ये है 3 ये 1 2 1 3 एटा है 4 तो मोड हो 8 बुझेला। तो यहाँ है द वैल्यू व्हिच occurs द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द सैंपल तो मोड हो यहाँ। तो यहाँ है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देन आसवा मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी दिस इंक्लूड द स्टैंडर्ड डेविएशन
स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस एगुड़ाक आमर स्पेसिफिकली ए दुटा एते यूज होनी एटा ही स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज हम कैलकुलेशन टाइम रे बा डाटा एनालिसिस टाइम रे. The standard deviation indicates the deviation of each score from the mean. Skewness indicates whether majority of the scores lie to the left of the mean, to the right of the mean, negatively skewed. बुझेला. Standard deviation indicates the deviation of each score from the mean. Mean रू केते deviation हेची सेटा हला standard deviation. स्क्यूनेसटा हला केते लेफ्ट रे मीन रो केते लेफ्ट रे अछि बा केते राइट रे अछि. जदि आमे एमती देखुचंती एटा हमर हे गेला मीन तो एटा केते लेफ्ट रे अछि एटा हला पॉजिटिव स्क्यूड केते राइट रे अछि एटा हला नेगेटिव स्क्यूड. बुझियला. Then kurtosis indicates whether the distribution of the scores is flat, peaked or bell shaped. बुझेला. सी कहबो तार शेप टाकू फ्लैट अच्छी कि पीक रही फ्लैट अच्छी कि पीक रही कि बेल शेप्ड अच्छी एटा से देखेबो. देन fiduciary limits indicates the interval within which the mean of the population will lie at 0.95 or 0.99 levels of confidence. एटा hypothesis testing कला बेले बा डाटा एनालिसिस हम जेतबेले करचंती एटा तार यूज होबो तार वैल्यू सब देइथिबो से अकॉर्डिंग हमको यूज करबा को पड़िबो. The fiduciary limits or the confidence interval of the population mean is estimated based on the sample mean. बुझेला. एटा sample mean ऊपर बेस्ड. The sample mean is known as the statistics and the population mean is known as the parameter. बुझेला. population mean हला parameter एटा हे गला statistics. The computation of population mean requires the use of standard error of the mean. Similarly, fiduciary limits or the confidence interval of the population standard deviation is also computed. तो ये सब गुड़ा को यूज करिकरी हमरो डाटा एनालिसिस कराबो जो गुड़ा कि हमरो जाउची descriptive statistics रे. देन आउ गोटे ऐड अच्छी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो थ्री कि हमें बार डायग्राम पाई चार्ट लाइन ग्राफ ये सब गुड़ाक यूज करके डाटा को डेस्क्राइब कर पारछंती बा एनालिसिस करिउची. एबे देखिबा इन्फरेंशियल डाटा एनालिसिस. तो इन्फरेंशियल डाटा एनालिसिस टा केतेबेले करा जिवो जेतेबेले हमें कंपेयर करचंती ग्रुप्स बा टू और मोर वेरिएबल्स गुड़ा को कंपेयर करचंती सेतेबेले हमरो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज होबो. एटा गोटे बेसिकली डिफरेंस डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भितर डिफरेंट हैला बा डाटा एनालिसिस भितर डिफरेंस हैला. डेस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस टा कोन करिवो एंटायर पॉपुलेशन को कवर करछि किंतु इन्फरेंशियल डाटा एनालिसिस टा कोन करछि जेतेबेले कंपेयर होछि वेरिएबल सेतेबेले यूज होछि. बेसिकली हमें कहि परिबा कोन ना एटा लार्जर पॉपुलेशन पई यूज करि हबो. इन्फरेंशियल डाटा एनालिसिस टा यूज्ड फॉर लार्जर पॉपुलेशन. जहाँ भी फाइंडिंग्स हमको मिलिबो इन्फरेंशियल डाटा एनालिसिस रे सेतेबेले कोन हे परिबो जनरलाइज्ड हे परिबो. से जो स्कोर टा हमको मिलिबो बा जहाँ फाइंडिंग्स मिलिबो सेटा जनरलाइज हे परिबो टू लार्जर पॉपुलेशन. The basic idea is to look at scores from a sample and use the result to draw inference or make prediction about the population. बुझेला. एटा larger population पे यूज हो परिबो. The main goal of inferential statistics is to use the information gained from a sample to make inferences about a large population with a certain level of confidence or probability. जहाँ sample रू मिलुची डाटा से थ्रू हमें फाइनल कंक्लूजन बाहर कर दे परिबो जोटा कि यूज हो परिबो कहा पई का फॉर लार्ज पॉपुलेशन पई का. बुझियला. देन
It encompasses two primary categories. First है hypothesis testing and regression analysis. Hypothesis testing and regression analysis. एठी हमें पढ़िबा एबे hypothesis testing, then regression analysis. तो hypothesis testing is a procedure for making decisions about results by comparing an observed value of a sample with a population value to determine if no difference exists between the values. एठी कौन hypothesis testing कहले हम कौन बुझे गोटे procedure for making decisions. कहाँ विषय decision make करबो about results. जहाँ भी result अच्छी सेटा कौन ट्रू और फॉल्स सेटा डिसाइड करो बाय कंपेयरिंग एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए सैंपल विथ ए पॉपुलेशन वैल्यू. सैंपल वैल्यू सहित पॉपुलेशन वैल्यू. सैंपल वैल्यू with population value to determine if no differences exist between the values. जदि किसी डिफरेंस रहुनी सेटा हमें टेस्ट करवा डिफरेंस रोची कि रोहुनी सेटा हला हाइपोथेसिस टेस्टिंग. दिस इज द ट्रेडिशनल वे टू टेस्ट वेदर ए सैंपल मीन इज गुड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन. जो थरे कि गोटे येस नो क्वेश्चन रहिबो. आइदर सैंपल मीन इज गुड एस्टिमेट और इट इज नॉट. तो ये डिफरेंट स्टेप्स सब अच्छी. मेजरली 5 स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. फर्स्ट है आइडेंटिफाई ए नॉल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. फर्स्ट गोटे नॉल एंड नॉल हाइपोथेसिस गोटे एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गोटे फाइंड आउट करने को पड़ो. देन सेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और अल्फा लेवल. कलेक्ट डाटा, compute the sample statistics, then make a decision about rejecting or failing or to reject the null hypothesis. It means make a decision about rejecting or failing to reject the null hypothesis. तो ये हमें बुझिबा व्हाट इज null hypothesis. Null hypothesis is a prediction about the population and is typically stated using the language of no difference, no relationship, no association. ये सब language use होइथबो. किंतु alternative hypothesis कौन? It indicates a difference and the direction of this difference may be positive or negative. जमती कि आम गोटे एग्जांपल देखा नॉल हाइपोथेसिस. तो यार सिंबलटा है ये टाइप रो नॉल हाइपोथेसिस. तो ये स्टेटमेंटा सब बेले नो यूज होइथो. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स ऑन डिप्रेशन स्कोर्स. एटा हला नॉल हाइपोथेसिस. एग्जांपल देयर इज नो डिफरेंस हमें ए स्टेटमेंटा यूज करले. तार अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन आम यूज करचुंदी. देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स ऑन डिप्रेशन स्कोर्स. बुझेला एटा हला नॉर्मल वर्ड रे यूज होची बा डिस्क्रिप्टिव. एटा हला नेगेटिव वर्ड रे नो यूज है कि नॉल हाइपोथेसिस रो स्टेटमेंट लिखा होची. बुझेला एटा हला नॉल हाइपोथेसिस, एटा हला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. देन सेकंड स्टेप को जीवा. सेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और अल्फा लेवल फॉर रिजेक्टिंग नॉल हाइपोथेसिस. जदि आम गोटे लार्ज नंबर ऑफ डाटा कलेक्ट कर गोटे सैंपल रू बा गोटे डाटा कलेक्ट कर जो सैंपल रे कि मेंबर लार्ज मेंबर अच्छी एंड इफ नॉल हाइपोथेसिस इज ट्रू
द थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बी ए नॉर्मल और बेल शेप्ड कर्व जदि नल हाइपोथेसिस टा ट्रू होची ताहले थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बी ए नॉर्मल और बेल शेप्ड कर्व तो यही टाइप रो हमर ग्राफ आसीबो जदि नल हाइपोथेसिस ट्रू होची बेल शेप्ड curves we would expect most of our sample to fill in the under area of the curve तो यार भीतर ही सैंपल गुड़ाक आमर आसबे यही कर्व एरिया भीतर ही आसबे if the hypothesis is true but a small number would fall at the extremes जदि hypothesis true अच्छी किंतु किछि नंबर जदि हमर बाहर आछुंती एक्सट्रीम रे आछुंती ताहले we would expect there to be an extremely low probability that a score would fall within these areas बुझियाला एठी reject null hypothesis जदि एई एरिया रे आसी जिवो ताहले null hypothesis reject हो जिवो तो एई एरिया रे पड़ले ही हाई प्रोबेबिलिटी रहियो जोठी null hypothesis टा को एक्सेप्ट करियो देन ए स्टैंडर्ड is needed for this probability areas for precisely marking them in this curve. This is called setting a significance label. गोटे significance label set करागला जोठी कि a significance label is a probability label that reflects maximum risk researcher willing to take that any observed difference are due to a error chance. Then it is typically set at 0.01 or 0.05 এই areas गुड़ाक 0.01 means कौन sorry 0.1 means 1 out of 100 times then 0.5 means that 5 out of 100 times जोटा कि लो स्कोर है कोटा ना 0.5 and extremely low probability value will automatically be observed if the null hypothesis is true बुझियाला तो सही एरिया टा को हमें क्रिटिकल रीजन बोली कहउचंती दैट एरिया इज नोन एज क्रिटिकल रीजन if sample data falls into the critical region the null hypothesis is rejected जदि क्रिटिकल रीजन रे सैंपल डाटा पड़ुची ताहले null hypothesis टा रिजेक्ट हे जाउची दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ देयर इज नो डिफरेंस as stated in null hypothesis we find the alternative to probably be true there is a difference आमे स्टेटमेंट रखिथिले null hypothesis रे there is no difference एटा जते बळे रिजेक्ट हे जाउची तो यार ऑपोजिट टा हे जिवो कोन there is a difference तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टा हे जाउची ट्रू नल हाइपोथेसिस टा रिजेक्ट हे जाउची दिस क्रिटिकल रीजन मार्क्ड बाय ए सिग्निफिकेंस लेवल occurs at both end of the normal curve जोटा कि हमर कर्व तिला ए जो both end रे आस्तला ए क्रिटिकल रीजन ए रीजन टा when the critical reason for rejection of the null hypothesis. However, if we place the reason at only one end of for rejection of null hypothesis, जदि one end रोची, we have a one tail test of significance. जदि एटा एमिति ही रहिला, one end रे रहिला, ताहले एठी one tail test होबो और one tail test of significance लागिबो then third step को आसीबा collection of data researcher collect data by administering an instrument or recording behavior on a check sheet for participants तो एठी data collection करिवो different methods सब यूज करिकी techniques tools सब यूज करिकी then compute the sample statistics एठी हला main calculation हबो researcher compute a p value and determine
if it falls inside or outside of the critical zone. Main hala critical zone. A p value is the probability that a result could have been produced by chance if null hypothesis is true. जदि null hypothesis टा true होची ताहाले p value आसीजिवो. एटा मन रखिया पड़िबो. If the null hypothesis is true, a p value or जहाँ को कोचे probability that a result could have been produced. ये probability टा बाहर पड़े p value टा मिल जिवो. Then degree of freedom df जहाँ कोचे used in a statistical test is usually 1 less than the number of scores. For a sample of scores, df equal to n minus 1. बुझेला degree of freedom n minus 1. 1 less than the number of scores. आमर जेति की scores अच्छी ताठू 1 less than कले सेटा को हमें degree of freedom. The degrees of freedom establish the number of scores in a sample that are independent and free to vary because the sample mean place a restriction on sample variability. Then 5. Make a decision about rejecting or failing to reject null hypothesis. Null hypothesis टा को reject करूची और failing to reject. Reject करिया को fail होची. सेठी गोटे decision नबा को पड़िबो. Then p value calculation first होबो तापरे determine कराबो observe कराबो p value is less than or greater than values obtained from a distribution of scores from the statistics. तो ये according हमको calculation करके बाहर करिया पड़े. Finally decide to reject or fail to reject the null hypothesis. तो एटा थिला हमर testing of hypothesis. Then देखिबा properties of normal probability curve. It is also known as bell curve or bell-shaped curve. Bell-shaped or normal probability curve. तो ये देखिबा हमें first property symmetry. The normal probability curve is symmetrical about the ordinate of the central point of the curve. Symmetrical ordinate of the central point of the curve. It implies that the size, shape and slope of the curve on one side of the curve is identical to that of the other side. एटा जेमती ए साइड टा सेम देखाउची आइडेंटिकल ए साइड सहित सेटा हला गोटे तार प्रॉपर्टी. That is the normal curve has a bilateral symmetry if the figure is to be folded along its vertical axis. जदि ए फिगर टा को हमें vertical axis रे fold करचंती the two halves would coincide. Two halves माने same similar two halves रहिबो. Or the left and the right values to the middle central point are mirror images. बुझिला एटा हला symmetry. Then आसिले जोटी की मीन मीडियन मोड सबू सेम रोची. Then the normal curve is unimodal. Since there is only one point in the curve which has maximum frequency, the normal probability curve is unimodal. That is, it has only one mode. बुझला. Then coinciding measures or the coinciding measures रे हमें देखिबा mean median mode coincides. The mean median and mode of the normal distribution are the same and they lie at the center. एठी सबु पड़चंदी center रे. Mean median mode सबु coincide करचंदी. They are represented by 0 along the baseline. 0. That is mean equals to median is equals to mode. बुझिला. Then area under the curve.
सबू जेते सबू सैंपल रहइबो हमर सबू एई एरिया अंडर रे आसीबो अंडर द कर्व एई एरिया अंडर रे सबू आसी जिवो देन asymptotic the curve approaches the x axis but never touches it approach करिवो कि never touches it extending infinitely in both directions से touch करिवोनी किंतु extend हे चलिवो तो यार ऑब्जेक्टिव्स कौन रही डाटा डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस फील्ड तो यहाँ हेल्प करुच्ची कौन ऑब्जेक्टिव्स रहिला डाटा डिस्ट्रीब्यूशन then data analysis standardization तो स्कोर टेस्ट जहाँ रोची ताकू सब स्टैंडर्डाइज करुच्ची देन स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस तो इथरु कौन होची डिसीजन नहीं होची डिसीजन मेकिंग डिसीजन नहीं होची बेस्ड ऑन सैंपल डाटा तो युड़ा कहला ऑब्जेक्टिव डाटा डिस्ट्रीब्यूशन करी होची बा डाटा डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस बा डाटा एनालिसिस बोली जहाँ को हमें कहूचे देन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस फील्ड्स डाटा डिस्ट्रीब्यूशन को देखिकी हमें डाटा एनालिसिस कर दउछन देन स्टैंडर्डाइजेशन हो पारची देन फाइनल कंक्लूजन मध्य से अकॉर्डिंग मिल पारची तो एटा थिला प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व व्हिच इज आल्सो नोन एज बेल शेप्ड कर्व और बेल कर्व